Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Although you have been forsaken and hated, with no one traveling through, I will make you the everlasting pride and the joy of all generations. Isaiah chapter 60 verse 15. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. నీవు విసర్జింపబడుటను బట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడునూ నీ మార్గమున దాటిపోవటలేదు. నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహుతరములకు సంతోష కారణముగాను చేసేదను. యెషయా ప్రవచన పుస్తకము 60వ అధ్యాయము 15వ వచనం. आज परमेश्वर का वचन. तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा. यशायाह 60वां अध्याय 15वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. ആരും കടന്നു പോകാതെ വണ്ണം നീ നിർജ്ജനവും ദ്വേഷവിഷയവും ആയിരുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നിന്നെ നിത്യമഹാത്മ്യവും തലമുറ തലമുറയായുള്ള ആനന്ദവും ആക്കി തീർക്കും. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 60ാം അധ്യായം 15ാം വാക്യം.